Hi everyone, I hope all of you guys are doing well. So today I'm going to tell you a few things because of which, despite having knowledge, information, understanding of various UPSC topics, you're not able to qualify for UPSC prelims or the mains exam. मैंने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं. I've seen a lot of aspirants throughout the journey, my own journey and even after my own journey of UPSC exam, कि उनको यूपीएससी के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी होती है. दे हैव स्टडीड हिस्ट्री वेल, दे हैव स्टडीड ज्योग्राफी वेल, दे हैव स्टडीड पॉलिटी वेल. इनफैक्ट यू माइट बी एन एस्पिरेंट हु फील्स लाइक दैट. When you see the topics, you understand them, you are able to recall knowledge, you are able to recall information, you are even able to analyze things. But despite that, there is something because of which you are not able to get through prelims exam or the mains exam. So ऐसे चार चीज़ें हैं. There are four things like that which I have tried to figure out through my own experience, my knowledge, by talking to others. And I'm going to tell you about those four things and how you can fix those particular four things. So the first thing is application of knowledge. बेसिकली क्या होता है कि आप देखेंगे तो यूपीएससी एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स एंड आंसर राइटिंग. एंड इन प्रीलिम्स यू हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द एनालिटिकल नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप खाली इन्फॉर्मेशन होगी तो उससे काम नहीं चलेगा. यू हैव टू बी एबल टू अप्लाई दैट इन्फॉर्मेशन, you have to be able to analyze that information and you have to be able to use sometimes derived knowledge. मतलब डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उसकी. You have to use derived knowledge in able to answer that question and that helps you to solve that particular question correctly. I will give you example of both prelims and mains like this कि आप application of knowledge क्यों नहीं कर पा रहे हैं. You are not able to apply your knowledge despite having the knowledge. फिर भी आप पेपर पे जब एग्जाम में बैठते हैं तो आप उसको अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं. देखिए एग्जाम्पल्स देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स 2022 just concluded. They asked the question, the first question in test series A that came for UPSC. They asked the question about rapid financing instrument and rapid credit facility. तो अगर ये आप क्वेश्चन खोल के देखेंगे, जैसे I have laptop in front of me and I'm trying to look at this question. The question is rapid financing instrument and rapid credit facility are related to provisions of lending by which one of the following. Now here the four options are Asian Development Bank, International Monetary Fund, United Nations Environment Program Financing Initiative and World Bank. Now here, do you need to know this fact to answer this question? You might have read this particular fact somewhere, this particular news somewhere. This question also came because this was in the news because Pakistan and Sri Lanka after COVID have faced a lot of financial problems, because of which role of this institute had become very important. So that is why this organization based question has come. This kind of questions come pretty much every year in UPSC, and this question is not a memorization based question or a question in which you need to actually even know exactly which institute does this or which organization does this. Here what you need to understand is the nature of these four bodies: Asian Development Bank, World Bank, International Monetary Fund and the United Nations Environment Program Finance Initiative. If you have read basics about these four institutions and apply that knowledge, application knowledge की बात कर रहा हूँ मैं, if you apply that knowledge you will be able to answer this question even you don't know this question. Now rapid financing instrument का क्या मतलब है और rapid credit facility का मतलब क्या है कि by just the nature of these words you can understand that some country needs quick financing, quick credit facility, rapid quick facility because of some kind of a problem, then this particular organization, lending body, can provide that. So now if you understand the nature of the organization, what does this kind of lending, you will easily be able to answer this question. So even if you have read the basics of such organizations, for example, World Bank, what does World Bank does, what does IMF does, what does ADB does, you will be able to answer this question. What does World Bank does? It provides loans and grants for development of countries across the world, and it focuses on low and middle income countries. On the other hand, Asian Development Bank also focuses on the same thing as World Bank, but mostly for Asian countries. What does the United Nations Environment Program Finance Initiative does? It works for sustainability and economy, tying economic projects in the world to various sustainable projects in the world. So that's the nature of that body. And finally, you have the fourth one, which is International Monetary Fund. What does that does? It does the job of providing financial stability, reduction of poverty, growth, etc. for countries when they are suffering from some kind of economic collapse. So obviously now, once you have understood the nature of these organizations, you don't need to even remember these things. You just need to remember IMF जब काम आता है जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है किसी कंट्री में, IMF बेल आउट होता है, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में. वर्ल्ड बैंक कब काम आता है? वर्ल्ड बैंक ऑलवेज कंटिन्यूसली काम कर रहा है डेवलपमेंट के लिए नेशंस के, स्पेशली जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज अफ्रीका एशिया में है. इसी तरह से ADB इज वर्किंग. इसी तरह से UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव का काम जो है वो इन्वायरमेंट रिलेटेड है. सो ऑब्वियसली you can just use this common sense and this basic knowledge, and you can apply this knowledge to answer this question even if you exactly don't know कि ये question
कौन से पर्टिकुलर ये जो कॉन्सेप्ट इसमें पूछा है ये कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये डिराइव्ड नॉलेज इसको बोलते हैं कि यू हैव बीन एबल टू डिराइव ए सर्टेन आंसर विद द हेल्प ऑफ ए सर्टेन नॉलेज दैट यू हैव. सो दिस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दिस एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या है? इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये है कि IMF क्या करता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ADB क्या करता है. इसमें यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, यू डोंट हैव टू रेटिफाई एनीथिंग, you have to understand the nature of these bodies and organizations, and that is what is UPSC looking for. So if you have this much common sense and you mark this question correct, you are already ahead of 80% of the aspirants who otherwise might get this wrong. Similarly, there is a question about inflation. There is a question which has been asked. This is question number 3 about inflation, where in the context of Indian economy, the RBI is what does RBI do when its inflation is high, when when the rupee is depreciating, etc. This kind of question UPSC has asked. Now again here concepts and application of knowledge will come into play. आपको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है, आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, आपको पता है इंडियन रुपी अप्रिशिएट कब होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. दैट लेट्स से देयर इज वेरी हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, देन हाउ विल RBI एक्ट? Why does RBI act that way when there is inflation in the economy? अगर inflation बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में हो रहा है, obviously RBI is not going to go ahead and buy bonds. इसके बारे में बेसिक NCERT में भी आप पढ़ेंगे. Then you will be able to. So इस तरह से आप ये मृणाल के नोट्स हों, चाहे नितिन सिंघानिया की बुक हो, चाहे आपके अपने नोट्स हों, चाहे आप YouTube पे कोई पर्टिकुलर चैनल्स इकोनॉमी के पढ़ें, NCERT पढ़ें, you will be able to understand this concept about inflation, interest rates and how they are interrelated. So that's why I always say focus on the concepts and application of knowledge पे आप ध्यान करो. इसी तरह से यूपीएससी के इस पेपर में आप क्वेश्चन नंबर 26 यू कैन लुक एट, क्वेश्चन नंबर 22 अबाउट सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 26 अबाउट लेवांट, क्वेश्चन नंबर 27 अबाउट बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान, क्वेश्चन नंबर 32 अबाउट वेब 3.0. सबसे आपको दिख जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे है, और करंट अफेयर्स में जो आ रहा है वहीं से छोटा सा एक फैक्ट उठाया और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे फोकस किया है. एंड द पेपर इज एक्चुअली वेरी मच डूएबल. येस इट्स अ लिटिल हार्डर, बट द कट ऑफ, आई डोंट नो वेयर द कट ऑफ विल गो, बट what I'm trying to say is that this is not a new paper. This is the same paper which is requiring you to do application of your knowledge. Similarly for mains, if the question topic is known to you, but the application of that particular question topic is not there on the paper, how will you be able to actually do well in the paper? For example, आपको पता हो सकता है कि earthquakes, landslides, volcanism, what are these topics? You might have studied these topics while preparing. You might know these topics. आपको definition भी आती होगी, आपको उसकी understanding भी होगी, but आप knowledge को, उसको एप्लीकेशन को पेपर पे मेंस के लिए अब मैं बात कर रहा हूँ नहीं लगा पा रहे हैं. क्यों? आप डायग्राम उसका ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल डायग्राम, आप उसके एग्जांपल्स नहीं दे पा रहे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस. यू आर नॉट एबल टू यूज द राइट कीवर्ड्स. फॉर एग्जांपल देयर माइट बी क्वेश्चन इन पॉलिटी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो उसमें आप एग्जांपल्स के तौर पे सुप्रीम कोर्ट केसेस नहीं दिखा पा रहे हैं. तो ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का पार्ट हो जाता है सारा. हियर व्हाट डजंट मैटर इज आपको कितना पता है, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू नो एंड हाउ यू आर एबल टू अप्लाई दैट टू द पेपर. ओके. And one other thing I have seen very commonly happening is the aspirants are not actually answering the question that has been asked. जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कुछ और ही लिख देते हो आप. तो आप पढ़ो क्वेश्चन को अच्छी तरह, read it properly, understand it properly and then write. Don't be in a haste. Okay, so the first point was about application of knowledge in UPSC paper is more important than coverage of your various topics. The second important thing is about practicing of various previous year questions in test series. So what this means is that you should at least do one full test series of mains answer writing. You should do one full test series of GS papers 1, 2, 3, 4 answer writing. You should do one full test series of prelims paper and you should do at least one full test series of ethics and also essay writing paper. अगर आप ये पूरा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आप सीख नहीं पाओगे. इन टेस्ट सीरीज को करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का सारा उद्देश्य, द होल रीजन फॉर डूइंग इट इज बेसिकली यू आर एबल टू अप्लाई योर नॉलेज, apply the entire knowledge that you learned on the paper by solving question papers. मैं आपको बताता हूँ, one thing I will tell you is even those aspirants who are not studying too much but doing a lot of question papers are sometimes able to do better than aspirants who are studying too much and not actually applying it in the paper. I will give you example from my own attempts. In my first attempt, in my second attempt, I was focused on getting more and more knowledge, but I was not focused on application of knowledge, and because of this I lost out 2 attempts when I could have qualified in my first attempt by understanding की nature of paper क्या है. इसी तरह से my brother was also appearing for the exam. You might know his fault was also that only that he was not focusing on application of knowledge, and that application of knowledge comes from practicing of previous year question papers of both mains and of both prelims and test series for main. Mains के लिए I would not suggest कि last 5 years की solve करो paper, just पढ़ लो एक बार, समझ लो. Try to see some of toppers copies. You can also see in my book I have presented one solved paper of last year. I have given many examples also. So from that you will get an idea how to answer and then you can apply that in this year test series.
And also for prelims test series, you can do a lot of mixing and matching. You can download these test series for free from different portals that are available, and from there, apart from one test series that you are doing, also subscribe to other test series, और बीच बीच में आप एक इनसाइट्स का कर लिया, एक विजन का कर लिया, एक वाजीराम का कर लिया, सो यू विल हैव ए गुड आइडिया, मिक्स एंड मैच करके ऐसे आइडिया पड़ जाता है। और डेफिनेटली पिछले 5 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स तो करो, मेंस के नहीं, जस्ट फॉर प्रीलिम्स के तो करो, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज too much focus on one subject. So one of the reasons that a lot of aspirants, despite having knowledge, are failing is because of too much focus on one subject. पूरा का पूरा effort, full effort you're putting in optional, whereas optional is 500 marks and the other papers are worth 1500 marks, almost 1250 marks, right? Similarly, in let's say history, you are studying history for 2-3 months without stopping. हिस्ट्री कितना ही आता है भाई, इन बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस देयर इज ए लिमिटेड पोर्शन एंड दैट इज आल्सो लेस स्कोरिंग। सिमिलरली मिसबैलेंस हो जाता है आपका, एस्से राइटिंग नहीं करी, एथिक्स राइटिंग नहीं करी, तो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज फोकस्ड ओनली ऑन माय ऑप्शनल, आई डिड वेरी वेल इन माय ऑप्शनल मैनेजमेंट ऑप्शनल, आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, that did not help me in that attempt because I got less marks in GS and essay. But my third attempt, I got good marks in management also, good marks in my optional management also, and good marks in my GS. In fact, best marks, highest marks in my essay and GS, because of which I was able to qualify. So you have to not put too much focus on one, cover everything properly and equally. And the last thing I'm going to tell you, the fourth most important thing, is poor time management. क्या होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते और आप टाइम लूज कर जाते हो कि टाइम कैसे जा रहा है आपका। बोथ, नंबर वन, आपका पूरा स्टडिंग का टाइम, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू ईच सब्जेक्ट, एंड सेकंड ऑल्सो फॉर टेस्ट सीरीज फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू आर नॉट एक्चुअली कैलकुलेटिंग हाउ मच टाइम यू शुड स्पेंड ऑन आंसर राइटिंग, पर आंसर कितना टाइम लगना चाहिए वर्ड लिमिट के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSAT के या फिर GSK में कितना टाइम लगना चाहिए, आपके एसए में कितना टाइम लगना चाहिए, उसको कैसे मैनेज करना है वर्ड लिमिट पे। तो ये सारी टाइम मैनेजमेंट दो तरह के, एक ओवरऑल आपकी स्टडिंग की टाइम मैनेजमेंट है जो आपको पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, और दूसरी सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स की टाइम मैनेजमेंट है, विच इज ऑल अबाउट योर मैनेजिंग योर टाइम एंड राइटिंग द अप्रोप्रिएट आंसर्स इन द टाइम दैट यू हैव बीन गिवन। सो definitely go ahead and track your practice and progress. Make a diary like this. I always write points I'm going to talk about to you guys, so I stay very organized. So keep your diary, keep your journal where you are able to write everything that you are progressing, so that later on you can use that as your progress yardstick through which you can measure your own time management, your own progress management kind of a thing. You can also use Excel sheet. Sometimes I use that also, but writing is also good. So these are the 4 things I wanted to talk about today. I hope they will help you in figuring out why you are failing despite having good knowledge. और देखिए, याद रखिए, a failure is never something that is a failure. जब भी आप कुछ गलत करते हैं, आप किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, that is only one step towards success. सो नेवर कंसिडर योर नॉट एबल टू लर्न समथिंग, आपको बहुत टाइम लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, फेलियर हो रहा है, तो उसको फेलियर की तरह, एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट मत करो, उसको पकड़ के आगे चलते रहो, क्योंकि वो एक स्टेप आप आगे, आप सक्सेस की तरफ आ गए हैं। सो फेलियर इज नेवर ए स्टेप बैक, इट इज ऑल्सो ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सक्सेस, टुवर्ड्स अचीविंग सक्सेस।